Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. Before we go into the topic, make sure that you are having a book of General Science Class 1 CSS series, and along with that it will be far better to have the workbook as well, because हमने जो activities साइंस बुक में करनी है उन सब का प्रैक्टिस पूरा का पूरा आपके पास वर्कबुक में मौजूद है। और इसके अलावा समर पैक मौजूद हो तो इससे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ समर वेकेशंस जितना टास्क दिया गया है वो आप करके आपकी लर्निंग और इनहांस हो जाएगी। और इसके साथ अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो कैंटब पब्लिशर्स ने आपके लिए रिसोर्स भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। Dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 5. And the name of this chapter is Animals Around Us. You remember we had studied about living and non-living things, and in living things we have studied about animals and plants in your previous classes. But today in this very chapter we will learn about different animals and their place of livings and different kinds of animals, right? So the SLOs for this chapter are students learning outcomes. Number 1, identify the animals they see around them. आपके इर्द गिर्द जितने टाइप्स के एनिमल्स हैं आप उनको जान जाएं। नंबर 2, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स दे सी अराउंड देम। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनके क्या फायदे हैं, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इंशाल्लाह। एसएलओ नंबर 3, आइडेंटिफाई द फूड विच different animals eat. कितने टाइप्स के एनिमल्स किस किस किस्म का फूड खाते हैं। एंड नंबर 4, recognize the importance of animals as a source of food and transport. We are using animals for our food as well as for our transport. And the next SLO is identify the homes of animals, nest or burrows. The next SLO is differentiate between animals that can and that cannot be kept at home. कौन से animals you can keep at home and which are those animals which you cannot keep at home. And the next SLO is identify measures for the better care of domestic animals. The next SLO is to recognize that plants and animals need water, food and air to live. And the next one is list ways in which they can take care of things around them. So, my dear students, I am going to show you some of the animals. To click on the first SLOs to identify the animals they see around them. I am sure कि inshallah most of the animals I am going to show it to you. आपको already उनको जानते हैं, आप उनको जानते हैं. Let me show the pictures of those animals to you. See the first pair of animals. What is on the left hand side? Shabash, do tell me the name of this animal. What? Cow. Yes, this is cow. Okay. And what is on the right hand side? What is this? Can you tell me? Yeah, of course. This is buffalo. Shabash. ये दोनों क्या खाते हैं? Yeah, you see, they eat grass. You have seen here. And ये क्या देते हैं हमें? They give us milk and meat both. Right? Okay, where they do live? आपको ये भी पता है. Mostly these are kept at homes, at houses, different places. I'm going to show you another.
The next one is this is. Do tell me, my sweet children. ये क्या चीज है? शाबाश. Have you ever visited zoo? Yes, this is elephant. This is elephant. जब आप लोग सीख रहे थे ABC, so E for elephant, या elephant for E. You remember? Okay, let me show you another one. And this is, okay, do tell me, hurry up guys. मुझे नाम बता दें इसका. क्या नाम है प्यारे बच्चों? शाबाश. Yeah, of course. This is giraffe. ये क्या चीज है? This is giraffe. और ये कहां पाया जाता है? Yeah, of course, it is found in forests. Yes, ये forests में, जंगल में पाए जाते हैं. Let me show you some other animals as well. और उसके बाद हम इसकी classification पढ़ेंगे. Let me show it to you once more. What is this? शाबाश. Recently ईद गुजरी है. आप लोगों ने किस चीज की कुर्बानी दी थी? Do tell me and let me show it to you one more. Yeah. This is sheep. And this is goat. अभी आप मुझे बताओ, आपने इन तीनों में से, बल्कि चारों में से 1, 2, 3, 4 आप लोगों ने ईद में कौन से जानवर की कुर्बानी दी थी? शाबाश. ओके, यू कीप इट विद योरसेल्फ, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो जो हैं ये अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं. मोस्टली हम इसको घरों में पालते हैं फॉर गेटिंग मिल्क आउट ऑफ देम, एंड सेम इज द केस विद दीज टू. ये दो जो है दीज आर वाइल्ड एनिमल्स. ये आपको फॉरेस्ट्स में या जू में मिलते हैं. ये दो हमें डोमेस्टिक में भी मिलते हैं, यानी शीप और गोट हमें मिलते हैं. अभी आते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ. आई एम गोइंग टू रीड इट विद यू. आप लोग अपनी बुक के अंदर ये भी देख सकते हैं, और ये हम मजीद कल परसों नेक्स्ट डेज में इंशाल्लाह इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. बट लेट मी फर्स्ट narrate. I'm going to read the text. Animals are living things. They need water, air, food and shelter to live. They move from one place to another to get food for different purposes. ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. There are different types of animals. There are different types of animals. There are different types of animals. They are different in shape and size. देखें, size इतना छोटा और इतना बड़ा, और shape कभी कोई एक shape का, कोई दूसरी shape का, different shapes और different sizes के. Some are big like elephant, like giraffe. Right, and some are small in size, like the cat, like the fly, like the small birds. So some are big, some are small in size. For example, elephant and giraffe are big in size. Cat and mouse are small in size. Some animals live on land and some live in water, like fish. For example, lion and camel live on land. Fish and frog live in water. Some animals live on trees. जिस तरह squirrels हैं और birds हैं, वो भी कहाँ पे रहते हैं? Trees पे रहते हैं. For example, monkey and squirrels. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? My dear students, I am going to ask you कि आपने इसमें क्या सीखा? I have removed this. Okay, let me show you once again. This is cow and this is buffalo. This is elephant and this is giraffe. These are sheep and this is goat. And you have seen कि animals are of different types, इनके different sizes हैं, ये different किस्म का खुराक खाते हैं, different जगहों पे रहते हैं. इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे. इस वक्त टाइम है किस चीज का? होमवर्क का. So my sweet 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 children, आपने होमवर्क के लिए अपना
वर्क बुक निकालना है और वर्क बुक से इसके सारे एक्टिविटीज सॉल्व करने हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। ओके माय स्वीट चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।